Uh, IELTS essay is of 5 types. You know that, there are 5 types of IELTS essay. First is opinion essay. Second is discussion essays. The third one is problem solutions. Fourth one is advantages, disadvantages. And fifth is double question essay. I'm only going to take discussion based essay today. Now, usually students find it difficult to identify the difference between discussion essays and opinion essays. And there is also one more essay that we call as advantages, disadvantages essay. So there is always a small tendency that people get confused, among this type of essays. So I'll be telling you exactly how you can identify a discussion based essay in comparison to the other essays. Now, how you will be able to identify a discussion based essay. The first part of the question for an IELTS discussion essay will be a statement containing two opposite views. So there will be a statement in the essay wherein there will be two opposite views, wherein for example काफी लोग ऐसा मानते हैं, काफी लोग ऐसा मानते हैं. So you'll be able to exactly judge कि ये discussion वाला essay है. You will then be asked to discuss both the sides of the argument and give your own opinion. Here is some typical wording that might be used. So पहला जो सेंटेंस होगा wherein it will be written काफी लोग ऐसा मानते हैं, काफी लोग ऐसा मानते हैं, and then there will be a question जिसमें ऐसा लिखा जा सकता है discuss both views and give your opinion, or discuss both these views and then give your own opinion, or discuss both sides of this argument and give your opinion, or finally discuss both sides of this argument. So in the first 3 points, if you look at the first three, let me come up with that again. In the first three parts or in the first three type of questions, you can see that you're required to give your own opinion, isn't it? In all these 3 parts, you are required to give your own opinions. So you need to give, not only are you required to discuss both the sides, but you're also required to give your own opinion. But in the last statement, you can see that you're only required to discuss both the sides of the argument and you are not required to give your opinion. So when you are not required to give your opinion, I strongly recommend that there is no need. अगर आपने ओपिनियन दे दिया तो उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, बट वाई यू शुड बी गिविंग और राइटिंग दोज थिंग्स विच आर नॉट required to be written from your end. So whenever the first three types of question comes, you are not only required to discuss, but you're also required to give your opinion. Okay. And if the last statement comes wherein you're only required to discuss, please don't give your opinion. Okay. Then let me take an example. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. Again, the sentence which is very common and you'll find it all the essays is give reasons for an answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience, and you should be writing minimum 250 words in 40 minutes. Okay, so this is a typical example of how the essay would look like. Okay, now let us try to understand that, which are the 3 common mistakes that most of the students, I would not say most of them, but many students commit. The first 3 errors is that when you are asked to give your opinion, it is imperative for you, it is necessary, it is obligatory, it is compulsory to give your opinion. Now there is always I got this calls from few students ke sir mujhe kya apna opinion should be written in a separate paragraph, so do I need to give my opinion in the introduction part? Yes, you are strongly required to write your opinion in the first paragraph itself. If you don't do that, that means you're not writing the essay in the format as is required by the IELTS people. So it is very, very important that you give your opinion in the first para itself, probably in the second line of the introduction. The first line obviously is going to be paraphrasing. Now there is also a format in which you can do something like this. You can have a separate paragraph to give your opinion. For example, you may write an introduction, then you will be discussing both the views in 2 different paragraphs, that is body paragraph 2 and body paragraph 3. And then you might want to give your own opinion in body paragraph 3, मतलब के वैसे देखा जाए तो ऐसे का चौथा paragraph, and then you go on writing the conclusion. This is also a fine method. I am not against that. बट अगर वो मेथड भी आप इख्तियार करते हो तो ऐसे केस में भी आपको अपना ओपिनियन पहले पैराग्राफ मतलब के इंट्रोडक्शन में देना जरूरी है. I repeat, you need to give your opinion in your first paragraph, in the first paragraph itself. Okay. This is the first mistake that you are committing, not giving your opinion. Second mistake that most of the students, again, many of the students rather, are committing is that they are not giving arguments on both the sides. Very, very important.
अगर आपको डिस्कशन वाला ऐसे लिखा है तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है, और दोनों साइडों को, जो तीसरा पॉइंट है एरर वाला, उसमें भी लिखा है कि दोनों साइडों को डेवलप करना जरूरी है. सो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट राइट ए वेरी गुड पैराग्राफ, बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर आइडिया, और आपने बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा, एंड देन द सेकंड साइड, ऑन द अदर साइड, यू हैव नॉट रिटन इट प्रॉपर्ली. नॉट ओनली दो चीजें हो सकती है, या तो आपने उसको मिस ही कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट अगर आपने मिस नहीं किया तो आपने ऐसा लिखा कि यू आर नॉट डेवलप, यू हैव नॉट डेवलप दैट साइड प्रॉपर्ली. सो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है फेयर एंड बैलेंस्ड. लेट मी टेल यू that you need to develop both these paragraphs in fair and balanced manner. So you cannot give justice to one paragraph. आप भले ही किसी भी point को select करते हैं, whether you select A side or B side, whatever you want to select, make sure that you are developing both the ideas in two paragraphs, that is body paragraph 1 and body paragraph 2, in very fair and balanced manner. तो ये तीन गलतियां हो जाती है बच्चों से. Number 1, they don't give their opinion in the first paragraph, and then number 2 is they miss out on one of the sides, और number 3, अगर side को लिया भी है तो उसको develop नहीं किया है. So these are the 3 mistakes that you probably should not commit in the examination. Okay, this is how the essay structure is going to look like. Now please go through this structure. इसमें मैंने थोड़े से changes किए हैं. I have removed the outline statement. Over here I have removed the outline statement. मैं उसका कारण बाद में बताऊंगा. So this is how you are going to write. Let me come up with this again. So in introduction, you are going to write 2 lines. The first is going to be paraphrasing the question. Then the second line is going to be the thesis statement, in which you are going to give your opinion. Exactly आप बताओगे examiner को कि which side you are going to go for. Then you are going to go for main body paragraph 1. For example, you will be taking the first side. Sorry, you will be taking over here body paragraph number 2. ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है. I would put it this way. This is going to be body paragraph number 1. This is body paragraph number 1, and this is body paragraph number 2. So just a small correction over here. There is a typo error. So in body paragraph 1, you are going to take the first side. You are going to give a proper explanation कि आपने ये side select क्यों की है, and you may also want to give an example. Example अच्छा है अगर आप देते हो तो बेहतर है, but even if you are not able to give examination in both these paragraphs, at least make sure that you give at least one example in any of these paragraphs. If you are not able to give the example, then you can need to add one more line explaining this viewpoint. ये आप कर सकते हो. Very, very important. And finally is going to be conclusion. It will be probably of 2 lines summarizing the key points and stating your own opinion. So this is how this is going to work like. Introduction will be having 2 lines. Body paragraph may be having 3 to 4 lines. 4 lines would be fine. 3 lines are also fine. Again, conclusion will be having 2 lines. So this is how the structure of the paragraph is going to be. Okay. Then now let us try to plan the essay. Now this is the essay that I would like to go through it. So you need to first of all understand. मैंने ये भी देखा हुआ है, काफी बच्चों को देखा है कि एग्जाम्पल ठीक से नहीं देते. They are not able to understand topic words, other keywords and instruction words. तो आपने ये बहुत समझना जरूरी है. काफी ऐसे हमने लिखे, लेकिन ये सीखोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. Now let us try to understand the topic first. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. तो ये तो तय है कि this topic is all about zooms. ये टॉपिक zooms के बारे में है. So this is going to be your main point कि zoo के बारे में लिखना है. ये तो आपको पता चल गया. Now other important part you need to understand is कि zoo के कौन से पहलू के बारे में लिखना है. zoo के बहुत पहलू हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, दिस इज ये वो है. एक तो ये कि जूज आर क्रूअल. तो आपके अगर जो साइड सेलेक्ट करते हो तो क्रूअल क्यों है, उसके लिए आपको आंसर देना है. एंड सेकंड वन इज इट कैन बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स. मतलब कि फॉर एग्जांपल उनकी संख्या जो है, उनकी जनसंख्या है, वो शायद बढ़े, उनको प्रोटेक्ट की जाए. तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. नंबर 1 is that you need to only be writing about zoos. This is what the topic is all about. And second most important part is that you need to understand कि zoo के मुझे कौन से पहलू को सिलेक्ट करना है. तो you can see that आपने zoo cruel है, तो you'll have to find out the reasons कि zoos cruel क्यों है. आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछना है. zoos के बारे में मैं वापस कहना चाहूंगा, zoos के बारे में बहुत पहलू है. You only need to select on these 2 important points. Number 1, why zoos are cruel for some people, and you need to develop that idea. And number 2 point is कि how can zoo help in protecting wild animals. This is very, very important.
एक मिनट. You take into consideration why zoos are cruel and why or how zoos can be helpful in protecting wild animals. So this is how I have described my ideas. This is what you need to do in your question paper. आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे पहले सिर्फ ये याद रखना है, सवाल यही है कि zoos cruel क्यों है, why zoos are cruel. See, let me tell you, there may be number of other disadvantages of zoo. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद जू बहुत पैसे खर्च होते हैं. जूस का ये भी तो डिसएडवांटेज है ना कि भाई उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत इनकन्वीनियंट रहता है, उसमें काफी पैसा चला जाता है, गवर्नमेंट पे बहुत लोड आता है, उनका रेवेन्यू, बिकॉज जूस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेवेन्यू, इजंट इट. जू तो it's only for information and entertainment for you people, but information for scientists. तो जू का ये पहलू नहीं लेना है. ये भी तो डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत पैसे खर्च करने हैं. तो आपने जू का कौन सा पहलू लेना है? क्रूअल. ये चीज याद रखिए आप लोग, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग इन देयर एसे डिसएडवांटेज तो लिख देते हैं जू के, बट वो डिसएडवांटेज लिखते हैं जिसके बारे में टाइटल में जिक्र ही नहीं है. तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाई जूस आर क्रूअल. तो पहला है रीजन उसका, because animals are kept in cramped cages and animals are distressed. cramped का मतलब ऐसी जगह पे बहुत छोटी छोटी जगह है, जैसे कि आप जानते हो कि usually tigers and lions are used to living in very good spaces, very big spaces, but when they are made to live in a small cage or a small area, then that means it's basically a very cramped area for them, so they get distressed. वो अपने मन में नहीं, उनकी स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है. दूसरा, unnatural environment. Why I'm putting this word unnatural environment? Because see, for example, if we have got a Kankaria zoo in Ahmedabad, and it is very very important that वो कांकरिया zoo होता है, तो कांकरिया zoo में बहुत सारे animals है. You have got lions, tigers, we also got probably animals coming from very cold places, and that the temperatures are soaring right now in Ahmedabad. Probably it should touch 45 degrees Celsius in 15 to 20 days. I mean, not 15 to 20 days time, but probably in months time. तो ऐसे केस में जो जानवर, जो प्राणी ठंडे प्रदेश से आते हैं, फॉर देम इट इज बेसिकली वेरी अननेचुरल. तो ये दूसरा क्रूअल है, इट इज अननेचुरल एनवायरमेंट. तीसरा, मोस्ट एनिमल्स आर नॉट एंडेंजर्ड. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड नहीं है, जो शायद नाश नहीं होने वाले हैं. तो हमने तो क्या किया है, सब एनिमल्स ले लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली दोज एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है, उनको ना छोड़ते हुए उनको तो लिया ही है हमने, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग वी आर ऑल्सो पुटिंग दोज एनिमल्स इन जू which probably are not endangered. जैसे कि डियर्स है, डियर्स आर नॉट एंडेंजर्ड, दे आर फाउंड इन प्लेंटी, तो उनको क्यों जू में रखना? नंबर 3. और चौथा, एनिमल्स बिकेम अ पब्लिक स्पेक्टिकल फॉर एंटरटेनमेंट. लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन बन जाता है. भाई ऐसा है कि बाहर से पिंजरे के बाहर तो बच्चा भी मूंगफली डालता है शेर को. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों के लिए वो आनंद का समय हो जाता है, लेकिन एनिमल्स के लिए इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एनलिस्टेड द रीजंस why zoos are cruel for animals. Now let us talk about दूसरा जो point है, this is going to be ये useful कैसे हो सकते हैं, how can animals, the zoos can be useful in protecting wild animals. तो पहला तो ये है भाई, research work to learn more about animals. In zoos you usually do research work, about animals, and it helps, this research helps in मेकिंग श्योर दैट एनिमल्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस पर दवाई का टेस्टिंग होता है. सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स. सेकंड इज ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज. ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किस लिए सर, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्यों जरूरत है? नाउ ऐसे एनिमल्स है जिनकी संख्या जो है बहुत कम है, तो उनका ब्रीडिंग ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट व्हाइट पांडा इन चाइना, देयर आर हार्डली फ्यू एनिमल्स लेफ्ट. So when there is a big area and there are very few animals, then they would not be able to breed. तो ब्रीडिंग प्रोग्राम जू में क्या होता है, उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति बढ़ सकती है. सम स्पीसीज सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन. जू के कारण काफी स्पीसीज को हमने नाश होने से बचा लिया है. एंड फाइनली, सीइंग वाइल्ड एनिमल्स क्लोज अप इंस्पायर्स पीपल टू वांट टू प्रोटेक्ट देम. जैसे कि अगर कोई आदमी है वो वाइल्ड एनिमल को देखता है तो उससे उसके लिए आदर भाव, रिस्पेक्ट होता है, बढ़ता है कि चलो भाई ये एनिमल को हमने देखा, इसने हमें मनोरंजन दिया, लेट अस ट्राई टू स्पेंड समथिंग ताकि ये जो जानवर है वो बचाए जा सके. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट डन ब्रेनस्टॉर्मिंग नंबर 1, व्हाई द जूस आर क्रूअल, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर हाउ जूस कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स.
नाउ यू डोंट नीड टू सिलेक्ट ऑल दिस पॉइंट्स, 4 पॉइंट इस तरफ है, 4 पॉइंट उस तरफ है, चारों 4 पॉइंट पे नहीं लिखना है. ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट ओनली 1 पॉइंट. तो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू सिलेक्ट वन पॉइंट ऑन वन ऑफ द साइड्स. तो मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए. आइडिया नंबर 1, क्रैम्ड केजेस एंड अननेचुरल एनवायरमेंट्स, उसके कारण एनिमल्स डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं. अननेचुरल एनवायरमेंट और क्रैम्ड केजेस के कारण, ये मैंने पॉइंट ले लिया है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय बॉडी पैराग्राफ. और दूसरा फायदा वाला भी तो लिखना पड़ेगा कि जूस के कारण ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उससे काफी प्रजाति को बचाया जा सकता है. सो दिस आर द 2 पॉइंट्स दैट आई हैव सिलेक्टेड. You don't need to select these 2 points compulsorily. You can select any one of these points, but make sure it serves the basic purpose कि भाई zoos cruel क्यों हैं. Number 2, zoos how can they be helpful in saving endangered species. Now most importantly vocabulary. मैं हर वक्त बच्चों को ये कहता हूं कि आप जब लिखते हो तो ये चेक करो कि vocabulary क्या क्या कर सकते हो आप, because you don't need to utilize the same vocabulary again and again. For example, zoos के लिए देखिए समानार्थी शब्द कौन से, what are the synonyms. So you can say for zoos synonyms are animals in captivity. Captivity is also one type of in prison. Captivity is the synonym of prison. So rather than writing zoos every time and everywhere, you can utilize animals in captivity. You can also say collections of wild. So rather than saying zoos, क्योंकि zoos का हर वक्त नहीं आएगा, और zoo को आप सेंचुरी नहीं कह सकते, zoo है, सेंचुरी सेंचुरी है, isn't it? फिर collection of wild animals. Then है menagerie. Menagerie is also a one type of zoo. And finally a wildlife park. But make sure that you don't utilize sanctuary instead of zoo, because sanctuary is a bigger area and the purpose of sanctuary is far more different than that of zoo. So these are few of the words that you can utilize in your essay, just to make sure that you don't utilize the same word zoos again and again. दूसरा शायद वर्ड, बिकॉज क्रूअल पे हमें फोकस करना है, isn't it? तो क्रूअल का भी इस्तेमाल बार बार होगा. आपने ये भी देखना है, सी हाउ यू कैन आप, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा. तो उसीलिए तो मैंने आगे का स्लाइड दिखाया आपको, कि आपको पता चले कि जूस तो है, तो जूम वो मेन पॉइंट है, तो आपने उसके बारे में सिनोनिम्स ढूंढने हैं. नंबर 2, 2 चीजें, क्रूअल, तो क्रूअल का इस्तेमाल भी बार बार होने वाला है. तो यू कैन यूटिलाइज वर्ड्स लाइक टू कॉज सफरिंग, रादर देन राइटिंग क्रूअल, यू कैन से टू कॉज सफरिंग. इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय. It is not good, your behavior, your behavior towards your people is absolutely cruel, is absolutely inhumane. आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का मतलब तकरीबन सेम है. प्रोटेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सेफ गार्ड, प्रिजर्व एंड एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स का भी इस्तेमाल बार बार होगा, तो आप यूज कर सकते हो क्रीचर्स और स्पीसीज. सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. Okay, now this is what I am going to do, how to write an introduction. But before we go into writing the introduction, मैंने बताया था कि राइट इंट्रोडक्शन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. नंबर 1, you need to paraphrase the question, and secondly you need to give your opinion. This is very important. मैंने पहले भी बताया था, in a discussion based essay and in opinion based essay, make sure that you give your opinion right from the first paragraph itself. Now this should be something like this. इंट्रोडक्शन तकरीबन इस केस में तो 2 ही सेंटेंस का होगा, 2 ही सेंटेंसेस का होगा. तकरीबन the length of the introduction should be 40 to 60 words. That's the only thing you need to remember. Okay, and you probably should spend 5 minutes to write. Don't spend too much of time. Now start your introduction by paraphrasing the question. Question आपका ये है, इसको एक बार वापस से देखिए. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. So this is the sentence. You don't need to utilize paraphrase the sentence, discuss and give your opinion. वो नहीं करना है आपको. आपने सिर्फ यही चीज को you need to write down in your own words. You just need to paraphrase. So this is what you need to do. See, आप ये language का इस्तेमाल कर सकते हो instead of, because दो पहलू है. So you can utilize some people argue that ... while others say that. This is one of the phrases you can utilize. Or else you can say it is considered by some ... while there are others who think ... Please try to utilize anything that you feel comfortable. And तीसरा जो है, it is often argued that ... whilst others disagree and think ... So this are, ये आप, मैं चाहूंगा ये तीन phrases आप memorize कर लीजिए. इसमें से 2 फ्रेज, ये फ्रेजेस ऐसे हैं जो आपको ओपिनियन एसेस लिखने में भी काम करेगा, बिकॉज ओपिनियन में भी 2 ओपिनियन होते हैं. इट इज आपका ओपिनियन क्या है. So ऐसे केस में
These are the starting phrases that you can utilize not only in discussion based essays, but you can also utilize in opinion based essay. Okay, fine. Now you can utilize any one of this, and this is the format that you can utilize. I have changed this format. I have changed this format so that it has become a bit more interesting. इसमें काफी words का इस्तेमाल हुआ है. So I'm just utilizing this format for you. Some people argued that ... while others say that ... So this is what we are going to utilize. Though he sentence the introduction में only 2 sentences are there. Although the ... I believe that ... Okay. So this is how the first paragraph is going to go. This is the second paragraph. Remember one thing कि आप जब discussion वाला ऐसे लिखते हो तो in the first body paragraph the best way out is to start with on the one hand. On one hand नहीं, मैंने काफी बच्चों के essays देखे उसमें लिखा होता है on one hand. It's grammatically wrong. आपको bends कम मिलेंगे, तो आपने याद रखना है on the one hand followed by a comma. I have missed a comma over here, but you should utilize a comma. Then this is important. You need to just that was a topic sentence. इसको आप समझाते हो with the help of any of these phrases. This is important. या फिर लिखे in other words. This is because. That's why any of these phrases. And then in the third sentence you are giving an example. A good example of this is. Then if you are written on the one hand in the second paragraph, I recommend you write on the other hand in the third paragraph, again followed by a comma. याद रहे कि यहाँ पे अगर लिखा है this is important, don't utilize the same sentence over here. Don't start with this is important. You may start with in other words or vice versa. So what I'm trying to say is, if whatever phrase you have written over here should not be repeated over here. And finally, for instance, again for giving an example, I have changed the things. यहाँ पे लिखा है a good example of this is, but over here it has been changed to for instance. So again for giving example, I have utilized different phrase. Finally, in conclusion, both sides of the arguments have their merits. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है in comparison to the previous format that I gave or you have. In spite of the fact that, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले although लिखा था तो उसके बदले मैंने कर दिया है although. Again वो भी एक contrasting connective है. So instead of writing although, I don't need to copy down the same thing over here. तो although के बदले मैंने लिख दिया in spite of the fact that ... यहाँ पे मैंने लिखा था I believe that, उसके बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया I am of the opinion that. So that way it's basically a very changed format. You are not utilizing the same thing again and again. You can utilize however as well. Yes, that's true. I hope this format is clear. Now before I do that, let me explain you कि सर ये although कैसे लिखा जाए. How can I utilize this although? Now first of all, I need to ask you a question. Let me first of all utilize I in your essay. I is only going to be utilized in 2 types of essays. First is discussion essays, discussion वाले essay में, and opinion based essay. In advantages, disadvantages, problem solutions, probably you are not going to utilize, but in opinion essay and discussion essay, you are going to utilize I. तो देखिए यहाँ पे I का इस्तेमाल हुआ है. Now coming back to the part, sir इसको introduction को कैसे लिखा जाए? Now this is how you should be writing. ये आपका introduction था. See, this was the title of the essay. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. I have just paraphrased this sentence. Check it out. Some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhumane and should be abolished. Now, what I have done is that not only have I changed the words, but I have also changed the sequence of ideas. For example, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है zoos are cruel. तो मैंने zoos are cruel से start नहीं किया, मैंने किया zoos help to preserve wild creatures. देखिए, मैंने दूसरा statement पहले ले लिया. It is absolutely fine as long as I'm not changing the meaning of the title. Have you understood, students, what I have done? I have not, मैं cruel से start कर सकता था, but I did not do that. मैंने ideas को तो change, मतलब मैंने words को तो change किया. I also changed the sequence of ideas just to make sure that I am giving justice to paraphrasing. Okay, so this is going to be the first statement of your essay. I hope everybody is clear with this idea. Okay, now coming back to the thesis statement and the most important one. And the most important one. Now, while the development of breeding programs, या तो फिर आप although भी कर सकते हो,
Although the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, या तो फिर while the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that the poor conditions of the captivity in which many animals are kept make the existence of zoos unacceptable. So do you believe, आपको ये देख के पता चल रहा है कि whether I am of the opinion that zoos should be there or not? What do you think according to my thesis statement? Can you tell me, guys? Can you tell me whether I am with zoos or I am against the zoos? I want answer from everybody. I am with the zoo or I am against the zoo? Guys, I am against the zoo. क्योंकि मैं मानता हूँ, what I am doing is, I am saying that, yes, I do understand that zoos do play an important role, but I believe that because the animals are put into condition or they are kept in the conditions which is very very cruel, I believe that I am against the zoo. अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है, you need to understand over here कि सर कैसे लिखा जाए. तो आप इतना स्टार्ट करें, आपको जो साइड पसंद है उसकी ऑपोजिट साइड को अल्दो से स्टार्ट कीजिए. I repeat, let me put it this way. I am right now over here, instead of writing while, I am writing although. Now just understand, although the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that means I am giving my opinion. I am giving my opinion in opinion discussion based essay in which you are required to give your opinion. Please write the word I. It's fine. You can say this essay believes that. ये आप कह सकते हो, but there is nothing wrong in writing I. The examiner will be much more clearer कि आप अपना अभिप्राय दे रहे हो and you are very clear in what you are saying. Now what I am trying to say over here is that आप जो साइड सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सेकंड स्टेटमेंट में लिखे. So you need to write select. तो you need to start with although जो आपके ऑपोजिट साइड है, you need to start with that. So although अगर आपने फॉर एग्जांपल आप ऐसा चाहते कि नहीं भाई zoos acceptable है, तो आप ऐसे स्टार्ट करते, although the poor conditions of the captivity in which many animals are kept make the existence of zoos unacceptable, I believe that the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species. Have you understood or not what I am trying to say? Yes or no? Is it clear what I am trying to say? शांति से देखो कैसे क्लियर करना है. तो आप जो साइड सिलेक्ट करना चाहते हो उसको ऑपोजिट साइड से स्टार्ट कीजिए. क्लियर? अल्दो के बाद आपके ऑपोजिट स्टेटमेंट होगा एंड देन यू आर गोइंग टू राइट विथ योर ओन स्टेटमेंट. देन इट वुड मेक मच मोर लॉजिकल. You don't need to write any other sentence. First, this is all what you need to do. This is going to be your introduction. This is probably roughly of 50-60 words, 50-55 words hoga. So I repeat, some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhumane and should be abolished. This is the paraphrasing of the essay. And finally, I am writing my thesis statement, the most important statement in the essay. Although the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that poor conditions of the captivity, that is zoo, in which many animals are kept, make the existence of zoos unacceptable. It's a very nice introduction. I am able to justify all the things. मैंने अच्छी तरह से paraphrasing भी किया, मैंने दोनों तरफ balanced opinion दिया, but then I also made my opinion very clear that this is what I believe should be done. Is it getting there? I believe that आप कह सकते हो. Okay. Okay. Any questions, any doubts? Now come, let us talk about the second part, body paragraph. मैंने आपको बताया था कि body paragraph 1 और body paragraph 2 में क्या करना है. In body paragraph 1, I am going to write breeding programs for endangered species, some species saved from extinction. हमने बताया था कि भाई breeding ये zoo का फायदा क्या है. So I am going to write the advantage of having a zoo in the main body paragraph number 1. And in main body paragraph number 2, I am going to say why zoos are cruel for people. Now let us try to see the second paragraph, the body paragraph number 1. Okay, so this is how the body paragraph number 1 is going to be developed. Okay, so let us start with this. On the one hand, there are many projects. Shanti se suniye, very very important. I am going to read very slowly so that it absolutely fits into your mind. On the one hand, there are many projects in existence in zoological parks around the world where species facing extinction have been successfully bred
in captivity and their numbers have increased substantially. काफी जगह ऐसी है जूलॉजिकल पार्क से दुनिया में जहां पे स्पीसीज जो नाश होने की कगार पे है वहां पे उनको सक्सेसफुली ब्रीड किया गया जू में और उनके नंबर्स को काफी हद तक बढ़ाया गया. ओके, देन my second statement, I'm going to give a supporting statement. This is important for ensuring the survival of animals under threat from poaching and the destruction of their natural environments. इससे ये फायदा है कि उन एनिमल्स को बचाया जा सकता है जो लुप्त होने की कगार पे है. किससे बचाया जा सकता है? From poaching. Poaching is very very important word that I am utilizing over here. Poaching is illegal hunting. आपने शायद वीरप्पन का नाम सुना होगा जो हाथियों की तस्करी करता था, उनके लिए वो पोचिंग वर्ड है. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट्स, उनके नेचुरल एनवायरमेंट्स भी काफी डिस्ट्रक्ट हो रहे. ताकि तो अगर हम जू में उनको ब्रीडिंग कराए तो उनकी जो 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 जनसंख्या है, वो जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल कि भाई ये जो एग्जांपल, तो मैंने एग्जांपल दिया. गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज द गोल्डन लायन टैमारिन. टैमारिन एक छोटा सा मंकी है जो स्क्विरल की साइज का है और वो ब्राजील में पाया जाता है. सो टैमारिन इज अ काइंड ऑफ एन एनिमल जो लुप्त होने की कगार पे था. सो अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज द गोल्डन लाइन टैमारिन फ्रॉम ब्राजील which nearly died out because of logging and mining activities which are destroying its habitat. Today, a third of wild golden lion tamarins were raised in captivity. इसी कारण से जू के इस रवैये से, जू को रखने से गोल्डन लायन टमारिन जो ब्राजील में पाया जाता है, जो मरने की कगार पे था लॉगिंग और माइनिंग एक्टिविटीज से, और उनकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब वो जगह जहां पे वो लोग रहते हैं, वो कम होता गया. तो आज की तारीख में इन जूस के कारण हम गोल्डन लायन टमारिन्स को बचा तो पाए और इन जू में अब दुनिया भर के 1/3 लायंस वहां पे मौजूद है बिकॉज ऑफ जूस. अब इन तीनों लाइनों को हम एक साथ रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा. So you can see the first statement is the opinion statement followed by supporting statement. This is important. Finally concluding the entire paragraph with a good example जैसे कि यहाँ पे लिखा है. So I hope this is clear. Let me put it this way. Just hold on. Now let us move on to the second paragraph. On the other hand से start करना है. A significant percentage of zoos house their animals in crammed cages. Crammed मतलब बिल्कुल कम जगह है, उसको crammed कहते हैं, cages with very little space to move around or behave naturally. क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी लिखना है कि zoos क्यों क्रूअल है, तो उसका पहला स्टेटमेंट ये है कि इसलिए क्रूअल है कि वो लोग crammed जगह पे रहते हैं और अननेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं. उसका पहला लाइन. आई एम नाउ गोइंग टू सपोर्ट दैट विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट. दिस कैन लीड टू देम मतलब एनिमल्स बिकमिंग डिस्ट्रेस्ड. काफी एनिमल्स आप देखते हो जूज में, उनका गुस्सैल वर्तन हो जाता है क्योंकि बहुत कम जगह में रहते हैं. काफी अटैक्स जो होते हैं जूज में, आपने देखे होंगे काफी वीडियोस में, is because of the fact that animals feel distressed and depressed because of very small environment, cramped cages, as well as suffering physically through lack of exercise. वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाना उनको डायरेक्ट मिल जाता है, उससे वो डिस्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं. ओके, फाइनली आई एम सपोर्टिंग दिस आइडिया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहूंगा कि आप अपने पर्सनल एग्जांपल ना दीजिए. I was checking someone's essay, probably a day before yesterday, and I found out that somebody was giving his or her own example. I का इस्तेमाल example में नहीं करना है. So अगर आपका खुद का example है, तो you can make it as an example of somebody else. जैसे कि, for instance, a friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset to see the lions pacing up and down in a narrow cage and eagles in enclosures so small that they were unable to fly. मेरा एक दोस्त था, वहां पे कहीं एक जगह पे गया था हॉलीडे अब्रॉड. देखिए, अगर आपको जगह पता नहीं है तो आपने ऐसे लिख दिया हॉलीडे अब्रॉड, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग. तो वहां पे उसने देखा कि लायंस को बहुत कम जगह पे रखा गया है और ईगल्स को बहुत छोटे एनक्लोजर्स में रखा गया था, तो वो उड़ भी नहीं पाती थी. तो ऐसे केस में ये एग्जाम्पल है wherein I am saying that yes, they are kept in captivity. Pace मतलब they are not able to
they were unable to fly. Exactly. Lions pacing up and down. Pacing up and down मतलब इधर से उधर भटकना. That's what we call as pacing up and down. Okay. So this becomes my second paragraph, the body paragraph number 2. So this is how it works. And finally, very, very important, I'm going to write a conclusion. This is how the conclusion has to be written. अब मैं सबको ये कहता हूँ, in every lecture I take, I always tell my students कि जब आप conclusion लिखते हो, what advice do you need to do? Can you tell me students क्या करोगे? जब conclusion को लिखते हो, let me again pause the button. Okay. When you are writing the conclusion, you should always have introduction in your mind. I repeat, do not start writing the conclusion without having introduction in mind, or else the conclusion is always going to go in wayward direction. वो अलग दिशा में चला जाएगा. तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि when you are writing a conclusion, make sure that you are having introduction in your mind. दूसरी बात, आपको वही चीज दोहरानी है जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी है. Probably you need to restate that, but in different words. ज्यादा से ज्यादा 2 sentences लिखने हैं. Let me tell you students, in introduction you may go for writing 3 sentences. In body perhaps you may go for writing 4 or 5 sentences. But in conclusion, please make sure that you should not be writing more than 2 sentences. मैं अगर खुद इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखता हूं तो आई ओनली टेक 1 सेंटेंस टू राइट द कंक्लूजन, बट राइटिंग कंक्लूजन इन 1 सेंटेंस may be a Herculean task for you, so I recommend not to do that. But at the same time, I strongly recommend that you should be writing only 2 sentences and not more in the conclusion. Conclusion में इतनी चीज याद रखनी है, कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है. 2 वर्ड्स बहुत अच्छे हैं. इन कंक्लूजन या तो फिर टू कंक्लूड, यू कैन ऑल्सो राइट टू सम अप. इसके अलावा कोई भी फ्रेज का आप इस्तेमाल नहीं करोगे. आई रिपीट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट द कंक्लूजन बाय having a phrase in conclusion or to conclude or to sum up, but better is to go for in conclusion or to conclude. Now ये रहा आपका introduction. This was your introduction, so you should always have this introduction in your mind before you start writing the conclusion, and this is how I have written the conclusion. Check it out. अब इसको ऊपर कंपेयर करना. In conclusion, both sides of the argument have their merits. ये आपको मेमोराइज कर देना है. छोटा सा सेंटेंस है. अब देखिए मैंने क्या किया है. देखिए, you can see over here that instead of writing although, what I have done is I have written in spite of the fact. So although or in spite of are the same words, you know, they are the synonyms. In spite of the fact that zoos do help to safeguard dwindling. Dwindling मतलब कम होती हुई. Dwindling मतलब धीरे धीरे कम होती हुई populations of particular species. इसके बावजूद के जू सेफगार्ड करता है काफी स्पीसीज की पॉपुलेशन को कम जो होती है उससे सेफगार्ड करता है हमें. लेकिन यहां पे देखिए मैंने लिखा था आई बिलीव दैट, तो मैं वापस वो दोहरा नहीं रहा हूं. आई एम पैराफ्रेजिंग इट. आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट सफरिंग एक्सपीरियंस बाय मेनी कैप्टिव क्रीचर्स ड्यू टू अनसुटेबल लिविंग कंडीशंस. ये सारे वही वर्ड्स है जो हमने ऐसे लिखने से पहले पैराफ्रेज करके अपने क्वेश्चन पेपर या कहीं पे भी लिख दिए थे ताकि इसका हम रेडीली इस्तेमाल कर पाए. अमाउंट्स टू क्रूअल्टी, ये भी हमने पहले से पैराफ्रेजिंग किया था. एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट, मतलब जू को एग्जिस्टेंस देने की तैयारी, एग्जिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए. मैं जूज होने के खिलाफ में हूं. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. आप देखोगे, मैं चाहूंगा आप दोनों को बारी से देखें, एक बार से वापस से देखें, so that you can understand how you can write a proper conclusion. Okay, now let us move ahead now. Yeah, so this is how the entire essay is going to look like. आप देख सकते हैं जो bold words है, they are the words which are utilized from the format that I gave before in the previous slides. Let me know if you have got any queries, and also let me know if you have understood what I am trying to say. The second type of essay that comes is only discuss. That means you are not required to give your opinion. See, this is how the essay would look like. Again, वही topic है, but rather than saying discuss both views and give your opinion, you're only saying discuss both the views. तो उसके लिए आपका ये structure change हो जाएगा. Now see how this structure has changed. Some people argue that is remaining the same, while others say that this is fine. लेकिन आप देखिए, although that जो भी है, I believe जो है वो निकल गया. जो फर्स्ट पर्सन था वो निकल गया. हमने ऐसा लिख दिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड.
भले काफी लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पे अगर आपका ओपिनियन नहीं दिया गया है, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. इग्नोर्ड और ओवरलुक. दिस आर वेरी टू थिंग्स. दिस आर सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर. ये दोनों जो वर्ड्स है एक दूसरे के सिनोनिम्स है. तो उसी का मैंने इस्तेमाल करके यहाँ पे सेंटेंस बनाया है. दिस दिस फॉर्मेट इज समवट डिफरेंट टू द फॉर्मेट जहां पे आपको ओपिनियन देना है. तो यहाँ पे आई शब्द का इस्तेमाल नहीं आएगा. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन. सिर्फ ये एंड सेंटेंस ऐड हुआ. दिस ऐसे डिस्कसेस बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट विद वैलिड रीजंस एंड एग्जांपल्स. लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि दिस ऐसे डिस्कसेस बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय माय ओन पर्सपेक्टिव. दैट इज व्हाट आई हैव नॉट रिटन. आई एम ओनली सेइंग दैट दिस essay is going to discuss both the sides of the argument with valid reasons and examples, but I am still not giving my opinion. Now see how this essay will turn up. This is going to be the first paragraph. Let me tell you, the second and third paragraph are going to remain the same. Only this introduction and conclusion are going to change. I would recommend you people to go through the introduction. Kindly go through the introduction and see what change has taken place, in comparison to the one wherein you are required to give your opinion. शांति से देख लो. I have not utilized first person. I शब्द का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, because I am not required to give my opinion. If you have read it, let me know. I'll move on to the next slide. See what I have done. I have utilized the word like ignored. मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, but I have not mentioned my opinion. Okay. And finally comes the conclusion part. See how I change my conclusion. Conclusion को भी देखे. Instead of writing the word ignored, I have utilized the word overlooked. The body paragraph remains the same. Clear हो गया? Is it clear everybody? So this was the change in introduction and conclusion. You can go through this. These were the only two changes that took place in discussion wala essay, wherein you are not required to give your opinion. Okay, fine. So this is what I wanted to explain. And I am now going to take, the coming weeks, I'll be taking all this different type of essays with different formats. थोड़ा सा format में change आया हुआ है. I repeat, I change this format, every now and then, so that, I make sure that the same format is not repeated. So next time I'm going to take a different type of essay, probably next Monday. I would recommend you people to kindly attend each and every session. I'm sure attending this session will make you very clear as to how to write an essay. Any questions, any doubts, students? I'm just pausing the recording.